I'm Ashish. I'm the co-founder of BeUnic, and thank you for joining in. Today we'll be talking about queer activism in small cities, and we have the two very inspiring people, Vishal and Anand here. Vishal has been doing some great work with Abhimaan in Kolhapur, and Anand has been doing great work in Nagpur, which is also the city where I'm from. And I will not waste any more time and let these people share their journey with you. Hello, everybody. I'm Vishal from Abhimaan Kolhapur. It's been 3 years now since we formed Abhimaan. It was the month of November, so exactly 3 years. Before we begin, I would like to bring light to why we started Abhimaan. Uh, we had lost three friends over the period of 2 years to suicide, and the last person who had committed suicide was just 19-year-old. When this suicide happened, that is when me and a few other friends decided that we need to do something to create a safe space where the gay men could meet each other, talk to each other, so that whatever mental stress that they are undergoing because of being a gay person or not being able to express themselves, they could get rid of that little bit tension by coming to these safe spaces and interacting with people who are similar to them. That is how we started Abhiman. Now, our history itself, the reason why we started this initiative, will give you some insight on what happens to gay men in smaller towns of India. To begin with, even before we realize that we are gay, one of the biggest problem that happens is because of sometimes some gay people being effeminate. There's a lot of teasing, bullying, abusing, or they are outcast. So these are some problems which start even before we as a gay person identify ourselves as gay. So that's one thing. I know this is common in big cities and small town, but it is um, more common in smaller towns, because at least in bigger towns, there is little awareness about homosexuality. There's little tolerance towards people who are different, or maybe if there are bigger or better schools, they notice if somebody is being bullied or something like that. But in smaller towns, in school level and everything, when these incidences happen, most of them go unreported. So that's one problem that the LGBTIQ or the gay men especially face in small town. And then once you start realizing, about yourself, you start finding out. Then there is again the feelings of guilt, shame, fear, because not much is spoken about sexuality in general. Forget about homosexuality or sexual minorities, and because everybody around you is, into this cisgender heterosexual relationship, there's a lot of confusion, guilt, shame, fear as you're growing up. So that's another thing which is common in small towns, which I have noticed in Kolhapur. Uh, Another thing is like, when you are in a small town, coming out has its consequences. First of all, you don't have enough courage to come out, but finally, when you manage to get that courage to come out, then there are the consequences. You live in a small town, word spreads around quickly. You don't know whom to confide into and whom not to, because news in small towns spreads like fire. Everybody knows everybody, so that's also a big problem. That whom do you trust that person to keep it to themselves, and so coming out also has its own consequences, and word spread very quickly in small town. That becomes another challenge for a gay man looking for support and coming out. After coming out again, acceptance becomes a lot of problem. People in small town, the parents especially, are even from a generation or from a background where, again, sexuality, or sexually gender minorities, or homosexuality, these things they don't even know what it is. Forget about them knowing and not accepting it. In many cases, they don't even know that such thing exists. So that becomes a problem. And so okay, you survive the abuse and the bullying and the teasing in the childhood. You somehow manage to accept yourself. You overcome the feelings of guilt, fear, shame. You manage to have the courage to come out, and luckily, if you are accepted by the family members, then comes the challenge of finding a partner because of the limited options.
I'll tell you, very common problem here in the town of Kolhapur is because of people not finding, the youth not finding jobs or anything. They move out to bigger cities like Pune, Bombay, or any part of the world, and so the local gay men who live here are left with very limited options. So again, that becomes a problem of finding a life partner, and that again leads to the problem of loneliness, of not having that kind of structure or a family where you are loved, you are taken care of. um, at least in the bigger cities, since the population is huge and since there are platforms where you can interact or meet other gay men, you have parties, you have other social gatherings, whether they are related to activism or whether they are related to entertainment or just having fun. You have these spaces, you have these platforms where gay men can meet other gay men, but that is not there available for people in the small town. And so yeah, these are some of the challenges that I feel the gay men in small town, especially here back here in Kolhapur, face, like starting with the childhood, the abuse, the bullying, the teasing, the feelings of guilt, shame, acceptance. The coming out process is far more difficult from the other gay men in bigger cities, and even the process of acceptance is very slow, or most cases there's hardly any acceptance from the family. And like I said, difficulty in finding partner. There are other challenges that we face as far as activism is concerned or advocacy is concerned. We don't get permissions very easily to speak to institutes or organizations when we want to have sensitization sessions. Even if we have to talk about safe sex, it becomes difficult because they don't even talk about sex to forget about safe sex or sexual minorities. So that again becomes a challenge in small towns. I think Anand here can agree with whatever I've told. I mean, he must have faced the same things. Anand, what do you feel like? Sounds Totally. similar to you? Nagpur, any different? Yeah, Vishal, I totally agree with you. Like when we started in Nagpur, I'll start from the beginning that why we started the Sarathi and why we felt there is a need to work in the Nagpur city. When I was a kid, I faced lots of bullying like any other gay man and all that stuff. Uh, I was in love when I was 18, 19 years old, and uh, after the 5 years of relationship, it got break up because broke because my partner got married to a woman. Because छोटे शहरों में तो होता ही है कि और हमारे वक्त तो होता ही था कि शादी तो करनी पड़ती है. अब जाके ट्रेंड शुरू हुआ है कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी है. सो फैमिली एक्सेप्ट्स इट्स नाउ. बट वे बैक इन 1994, I'll say, I tried to commit a suicide, and when I was recovering from that suicide attempt, my mother asked me that मैंने जो आपको अपब्रिंगिंग दिया है आप सुसाइड नहीं कर सकते हो. क्या है ये? व्हाट इज द रीजन? व्हाई डिड यू टेकन दिस स्टेप? कोई लड़की का मामला है, कुछ पैसा है, कुछ बिजनेस में लॉस हुआ है, कुछ पैसा किसी को देना है, क्या है? सो देन आई सेड नहीं, अब इट्स दिस इज द टाइम नहीं कि अब मुझे सच बोलना है, अब मुझे छुपाना नहीं है. एंड आई केम आउट टू माय मदर इन 1994. And like every other mother, she had all these questions. नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तुझे पैदा करी, तू तो नॉर्मल था, बाकी बच्चा था, क्या तू हिजड़ा तो नहीं है? बिकॉज मैंने तुझे पैदा किया, आई नो कि आपके पास लिंग है. और फिर ये कैसे है? आप क्या नपुंसक हो? आप में कोई प्रॉब्लम है? तो फिर उनको उस वक्त तो लिटरेचर भी नहीं होते थे. आजकल तो आप लोग बहुत लकी हैं कि इतना सारा लिटरेचर है, इंटरनेट है. 94 में कुछ भी नहीं होता था. तो इट वाज अ वेरी स्ट्रगल फुल टाइम फॉर मी. एंड जो मेरे साथ के उस वक्त फ्रेंड्स थे, तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ स्ट्रगल माय मदर सेड मुझे ये सब समझता नहीं, होमोसेक्सुअलिटी, गे, ये सब क्या होता है, तू खुश है? मैंने बोला हाँ मैं बहुत खुश हूँ. तो माय मदर सेड ओके, इफ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी. सो आई एम लकी इनफ कि 1 महीने में मेरे घर का जो वो स्ट्रगल था कमिंग आउट प्रोसेस, वो बहुत इजी हो गया. और once your family accept, journey is very. So इससे शुरू हुआ. then I was working in Bombay in
though I visited Humsafar Trust time. So that way, I had a very good experience in Humsafar Trust, and I come back to Nagpur in 2002 because my mom doesn't want to stay alone. Nagpur आने के बाद में like we used to go to the cruising spots to meet our gay friends and all. अब तो क्रूजिंग स्पॉट सारे ऑलमोस्ट खत्म जैसा हो गया है, सारा ऑनलाइन चले गया है, बट हमारे वक्त में क्रूजिंग स्पॉट होते थे। तो वहां पर जब हम जाते थे तो बाकी फ्रेंड लोग होते थे। तो एक दिन अचानक न्यूज आई कि वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड ही गॉट डिटेक्टेड विद HIV। तो हम सब डर गए, वी ऑल गॉट स्कैर्ड एंड सबने जाके फटफट अपना पहले चेकअप करवाया खुद का। तो लकीली बाकी किसी और को HIV नहीं हुआ था। तो तब आया कि नहीं, हमसफर ट्रस्ट इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्यों ना हम हमसफर को बोले कि नागपुर में अपना ब्रांच चालू करें, क्योंकि HIV अगर एक जगह आया है तो और भी फैलेगा। वी स्पोक टू हमसफर ट्रस्ट, हमसफर ने पोलाइटली डिनाई कर दिया बिकॉज ज्योग्राफिकल डिफरेंस इतना लंबा है, बॉम्बे नागपुर। तो बोले हमारे लिए काम करना मुश्किल होगा इतनी दूर आके। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम तो NGO क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था। तो वैसे वी स्टार्टेड डिस्कसिंग विद अमंग द फ्रेंड्स की अब तो जरूरत है एक संस्था होनी चाहिए, बिकॉज हम किसी और संस्था के भरोसे पर कब तक डिपेंड करेंगे कि वो आके हमारे लिए काम करे। जब ये डिसाइड हुआ कि हाँ हमने संस्था रजिस्टर करना है, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि आपको अगर संस्था रजिस्टर करनी है तो यू नीड डॉक्यूमेंट्स। आपको चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में जाके अपना एक फॉर्म फिलअप करना है, साथ में अपने ID कार्ड्स, एड्रेस प्रूफ सब अटैच करना पड़ता है। तब रियल चैलेंज आया कि मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है जो खुद HIV डिटेक्ट हुआ है, हम दो रेडी है। अब मिनिमम 3 लोगों के नाम चाहिए इफ यू वांट टू रजिस्टर एन ऑर्गेनाइजेशन। यू विल नॉट बिलीव, मुझे 2 साल लगे तीसरा नाम ढूंढने के लिए। लोग सपोर्ट करने को रेडी थे, हाँ हाँ आनंद आप चालू करो हम साथ में हैं, लेकिन जब आता था कि डॉक्यूमेंट देना है सब बोलते थे नहीं, हम डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते बिकॉज होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट लीगल इन इंडिया। और हमारे घर तक बात पहुंचगी तो हमारी सेक्सुअलिटी घर में ओपन हो जाएगी, हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो 2 साल के स्ट्रगल के बाद में एक और हमारे फ्रेंड है राजीव राठी जी, वो सामने आए। उन्होंने बोला कि ID प्रूफ की बात है, ID कार्ड मैं जरूर देता हूँ मेरा, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैंने बोला कोई नहीं, मेरा काम अटका है ID की वजह से। उन्होंने ID दिया और तब जाके 2006 में हम लोगों ने संस्था को रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करना ठीक है हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद क्या, पैसा कहाँ से आएगा, संस्था चलानी है, यू नीड अ फंड, यू नीड अ रिसोर्सेस, यू नीड अ मैन पावर। वहां भी 2 साल और वेट किया हम लोगों ने, स्ट्रगल किया। और 2008 में हम लोगों को एक छोटा HIV अवेयरनेस प्रोग्राम मिला और हमने 2008 में एक्चुअली काम शुरू किया नागपुर में। बिकॉज HIV अवेयरनेस करना है या फिर आपको LGBT की एडवोकेसी करना है या आपको अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी है, यू नीड वन ऑफिस, यू नीड सम पीपल विथ यू। तो 2008 में एक्चुअली हम लोगों का काम शुरू हुआ और हम लोगों ने 4 लोगों का फील्ड स्टाफ, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक अकाउंटेंट ऐसे करके काम शुरू किया। और आज है कि हमारे पास में, उस वक्त हमने जब चालू किया तो हमें टारगेट पॉपुलेशन था 300 लोगों का। इसलिए मैं विशाल आपको भी बोलता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके अभिमान को रजिस्टर करो। सो आपके पास रिसोर्सेज आएंगे तो आप कोल्हापुर में आप जो 3 साल से काम करो, आप बहुत अच्छा आगे और काम कर पाओगे। बिकॉज कोई भी आपको काम करना है तो आपको पैसा चाहिए, जेब से आप कब तक लगा के काम करोगे। सो सारथी के साथ ये हुआ कि हम सफर ने हेल्प किया, लक्ष्य ट्रस्ट बड़ौदा गुजरात ने हेल्प किया कि टेक्निकली शुरू शुरू में जो प्रॉब्लम आते थे कि चैलेंज आते थे कि हमको सर्वे करना है फील्ड पे कि कितने लोग आपके क्रूजिंग एरिया में आते हैं, उनसे कैसे बात करना है, उनके सेक्सुअल पैटर्न कैसे मालूम करने हैं, उनका सेक्सुअल बिहेवियर कैसे पता करना है, कि हम उनकी HIV की रिस्क कितनी है ये जान सके। मैपिंग करना पड़ता है कि कितने क्रूजिंग स्पॉट्स नागपुर में हैं, वहां पर कितने लोग आते हैं, किस किस वक्त पे आते हैं, उसमें फिर उनका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, वो टॉप है, बॉटम है, वर्सेटाइल है, क्या वो कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं तो कितना करते हैं, कहाँ से एक्सेसिबल है कॉन्डम, अगर कॉन्डम अवेलेबल नहीं है तो फिर कैसे करते हैं।
क्या कॉन्डम नेगोशिएशन होता है दोनों पार्टनर के बीच में, या कॉन्डम सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है? यू विल नॉट बिलीव, लोगों को आज भी कॉन्डम कैसे इस्तेमाल करना है नहीं पता। और हमारे साथ तो होता है ना, गे रिलेशनशिप में, होमोसेक्सुअल में तो मेजोरिटी टाइम होता है सेक्स रात को अंधेरे में, झाड़ी झुड़पी में, कोपचे में नहीं होता है, तो वहां तो आप एक्सपायरी डेट भी चेक नहीं कर सकते हो। और कॉन्डम इस्तेमाल करना है, नेगोशिएशन करना है, इसलिए हमारी कम्युनिटी एचआईवी के रिस्क में ज्यादा है। तो हमने फोकस किया कि हम, हमारी कम्युनिटी के लिए हमको काम करना है, तो हम एचआईवी का सहारा लेंगे। ये गलत लगता है कि सहारा लेंगे ये शब्द यूज करता हूँ, बट सच है। अगर एचआईवी पर आप काम करना शुरू करते हो तो आपके पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आने से क्या होता है कि आपके पास अथॉरिटी होती है, कि जैसे विशाल ने कहा कि आपको परमिशन नहीं मिलती है एडवोकेसी करना है। तो अगर आप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके पास एचआईवी के प्रोजेक्ट हैं, तो आप खुल के पुलिस स्टेशन में, मीडिया में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके आराम से बात कर सकते हो कि हम ऐसी ऐसी संस्था है, रजिस्टर्ड है, हमारे पास गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो एचआईवी के लिए काम करता है। और एचआईवी के सहारे लेते हुए आप साथ में एलजीबीटी के मुद्दे भी धीरे से अंदर डाल सकते हो, जो हमने नागपुर में किया। तो आज हम सारथी में करीब 3,000 लोगों तक सर्विसेज देते हैं एचआईवी और अवेयरनेस की। साथ साथ में हम लोग मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करते हैं। और एचआईवी का प्रोजेक्ट होने की वजह से हम लोगों को सोशल वर्क कॉलेजेस में जाने का मौका मिला, मीडिया से अच्छा इंटरेक्शन हुआ, पुलिस का सपोर्ट अच्छा मिलता है। और अभी लास्ट वीक ही हम लोग ने नागपुर के कलेक्टर के साथ में मीटिंग किया है और उनसे अश्योरेंस लिया है कि जल्दी ही नागपुर के थर्ड जेंडर के लिए वो लोग सेपरेट टॉयलेट्स बनाएंगे, उनके लिए हॉस्पिटल में अलग से वार्ड रहेगा। और एसआरएस के लिए भी हम लोगों ने बात की है। एसआरएस जो होता है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, क्योंकि वो जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल होते हैं, तो उनके लिए सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उसमें काफी खर्चा आता है, 6-7 लाख रुपए आता है। तो वो हर किसी के पास होता नहीं है। तो सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी बॉम्बे में अवेलेबल है, साइन हॉस्पिटल में, और एक है पौंडीचेरी में, बाकी कहीं फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये ट्रांसजेंडर के लिए फ्री में अवेलेबल हो, उनके लिए काउंसलिंग अवेलेबल हो। काउंसलर्स हमारे पास है, लेकिन प्रोफेशनल काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बहुत जरूरत पड़ती है हमारी कम्युनिटी को। क्योंकि हम जो काउंसलिंग करते हैं वो एक अलग होता है, एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट के पास जाना है वो अलग होता है। तो नागपुर में हम लोगों ने करीब 4 साइकेट्रिस्ट ढूंढ के निकाले हैं जो बहुत एलजीबीटी फ्रेंडली हैं। अगर अभी आप देखो, 2 दिन पहले ही मैंने एक और वेबिनार किया था, कि उसमें ऑल ओवर इंडिया से 3 बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट हम लोगों ने बुलाए थे, और करीब 1.5 घंटे का सेशन चला, जिसमें हम लोगों ने ये मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का सेशन दिया। अभी कोविड में है, हम लोग कोविड का काम चल रहा था, तो अभी कंटिन्यूस मार्च से लेकर अब तक हम लोगों ने 800 ट्रांसजेंडर्स को हम लोगों ने राशन की डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये सब कब हो पाता है? अगर आप एक रजिस्टर्ड संस्था होना, तो आपको कोई भी हेल्प करता है। तो अगर छोटे शहरों में हमको काम करना है तो हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा, संस्थाएं बनानी पड़ेगी। जैसे नागपुर में हम लोगों ने इतने साल में एक्सपीरियंस देखा कि हम काम कर पा रहे हैं, तो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में चंद्रपुर, अमरावती, अभी रिसेंटली वर्धा में भी एक अलग से एनजीओ रजिस्टर करवाया है। हमने यहाँ पर ये किया कि हमने ब्रांचेस नहीं दिए, हमने वहां के ही यूथ जो थे उनको, जो हमारे गेट टूगेदर या इवेंट में आते थे नागपुर, उनको इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया, और उनकी सेपरेट संस्था वहां शुरू करवाई। अ, छोटे शहरों में, जैसे अभी विशाल ने बताया कि गे पब्स नहीं होते हैं, वाई, हमने सोचा कि क्यों हम वेट करें कि कोई पब ओनर या बार ओनर या रेस्टोरेंट वाला वो हमें इनवाइट करेगा। नहीं, हमने पार्टीज ऑर्गेनाइज शुरू करना चालू किया, और फिर धीरे धीरे बताया कि हाँ, ये गे पार्टी है। उनको अपने बिजनेस से मतलब होता है, वो लोग को पैसा चाहिए, बिजनेस करना है। तो वो फिर गे आ रहा है, लेस्बियन आ रही है कि स्ट्रेट आ रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता, अनलेस अनटिल आप अच्छे से बिहेव करो वहां पर, उनके प्रेमाइसेस में कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कि जो इलीगल हो, तो वो लोग को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह के माहौल क्रिएट किया हम लोगों ने। बार से निकल के लॉन में गए, लॉन से निकल के बड़े होटलों में के डिस्क में गए। तो अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ाया, और आज मुझे लगता है नागपुर में पहले से, जैसे लाइक जब मैं छोटा था और सिचुएशन थी, उससे तो मच मच बेटर सिचुएशन। फिर भी अभी भी जो चैलेंजेस ये आते हैं कि हमारी कम्युनिटी खुद को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करती है। चाहती, उसको पता है मैं क्या हूं, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं
होमोसेक्सुअल हूँ या एक गे हूँ या एक लेस्बियन हूँ या बाइसेक्सुअल हूँ, आज भी मेरे पास सारे जो केसेस आते हैं सब लोग, हाँ सर ठीक है मैं गे हूँ लेकिन मैं अपने घर वालों को बता नहीं सकता, बिकॉज आई लव माई फैमिली वेरी मच एंड आई डोंट वांट टू लूज देम। या होता है कि अगर मैं अपने घर में बता दूंगा तो मेरे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अपने पेरेंट्स के बिना रह ही नहीं सकता, बिकॉज आई लव देम वेरी मच। और उस प्रेशर में आके आज भी बहुत लोग शादी करते हैं, दोहरी जिंदगी जीते हैं, साल 2 साल 3 साल में तलाक हो जाता है। कितने केसेस देखता हूँ मैं, एवरी टाइम मैं आई कम अक्रॉस विद, से पिछले 10 साल में मैंने 60-70 डिवोर्स देखे हैं कम्युनिटी के अंदर। बाप रे। और सुसाइड्स भी हैं, सुसाइड्स भी है, सुसाइड ज्यादा इस वजह से हैं कि ये नहीं कि फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, सुसाइड ने ज्यादा ये देखा है कि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है, पार्टनर्स के साथ ब्रेकअप हो जाते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारे होमोसेक्सुअल्स लोगों में ज्यादा टिकते नहीं, बिकॉज समाज का बंधन नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हमें इस चीज पे काम करने की जरूरत है। और जब मैं अभी हम लोगों ने नागपुर में एक बहुत अच्छा है कि एनसीसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया, इनके हाथ एडवोकेसी कर करके आज है कि उनके एनसीसी के 180 चर्चेज अक्रॉस द इंडिया है, वो सारे 180 चर्चेज एलजीबीटी को एक्सेप्ट करते हैं। और नागपुर में दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था हमारे लिए कि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर है। एंड हम लोगों को वहां से हमेशा थ्रेट्स मिलते थे कि स्टॉप दिस, इसको बढ़ावा मत दो आप, लेकिन हमने डरे नहीं कभी। और टचवुड कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं। आज हम नागपुर में बिल्कुल सिटी के सेंटर में बैठे हैं, जो सीताबड़ी एरिया है वहां पर लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, वाईएमसीए एक क्रिश्चियन कैंपस है हमारा जो ऑफिस जहां पर है, और बिल्कुल बाजू में एक बीजेपी एमएल है, उनका ऑफिस है आशीष देशमुख करके। तो लकीली, और जब मुझे ये बोला जाता है ना कि नहीं नहीं आप लोग को बढ़ावा देंगे तो सब पूरी सोसाइटी ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं 15 साल से इस कैंपस में बैठा हूँ, मुझे बता दीजिए इस कैंपस में एक भी हमारी वजह से कन्वर्ट हुआ है क्या? और कन्वर्ट की बात आती है ना, तो मैं ये जवाब दूं कि हम तो माइनॉरिटी है, हम तो 5%, 95% तो आप हो ना हेट्रोसेक्सुअल, तो कन्वर्ट किसने होना चाहिए? तो कन्वर्शन होता नहीं है, ये सब एक गलत धारणाएं हैं कि कन्वर्ट होते हैं, या अगर हमने आपको बढ़ावा दिया तो पूरी समाज ऐसा हो जाएगा। एक रिलीजियस कैंपेन था वहां पर, एक मुस्लिम भाई मुझसे बहुत बहस कर रहे थे कि नहीं इसको अगर बढ़ा दिया तो समाज खत्म हो जाएगा। मतलब समाज कैसे खत्म होगा? हम 5% लोग हैं जो बच्चे नहीं पैदा करेंगे, आप 95% लोगों तो बच्चे पैदा करोगे ना, तो फिर समाज कैसे खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं करना है बच्चा पैदा, तो मैं अडॉप्ट करूंगा, मैं जिसको माँ बाप नहीं है उसका बाप बनूंगा, उसकी माँ बनूंगा। आप लोग करो ना पैदा, संस्था जनसंख्या खत्म नहीं होगी, समाज खत्म नहीं होगा। तो इफ यू आर्ग्यू प्रॉपरली, इफ यू डिबेट, और हमें सबसे पहले छिड़ना नहीं है, कोई जब हम अपोज करते हैं तो हमें छिड़ना नहीं है, हमें उसको बहुत पॉजिटिवली लेना है। मुझे हमेशा मीडिया में सवाल पूछा जाता है कि लोग इतना आपको खिलाफ जाते हैं, आपसे अगेंस्ट बात करते हैं, आपके बारे में गंदी बातें करते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? मैं बोलता हूँ नहीं, उनकी गलती नहीं है, उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि एलजीबीटी क्या होता है, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने जो थोड़ा बहुत फिल्मों में देखा है, पैंजी गेज और इस तरह के गे लड़के होते हैं दूसरों के बॉयफ्रेंड चुरा लेते हैं, ये सब देखा हुआ है। बहुत बायो तरीके से दिखाते हैं मूवी में, वो देखा हुआ है, कहीं से आधी आधी अधूरी जानकारी है। तो जब तक वो एक गे से या ट्रांसजेंडर से आमने सामने बात नहीं करेंगे उनको पता नहीं चलेगा। आज भी मेरे ऑफिस के बाजू में एक कैंटीन है, वो भैया बोलते हैं आनंद सर आप गे नहीं हो। मतलब क्यों जी? बोले नहीं आप इनके लिए काम करते हो, आप गे नहीं हो। मैं बोला भाई ऐसा क्यों बोलते हो? बोले नहीं नहीं ये देखो ये लोग कैसे बात करते हैं, मैं आई थी मैं गई थी, आप नहीं बात करते हो। मैंने मैं गे हूँ, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मुझे खुद में अंदर औरत कहीं नहीं लगी, तो मैं नहीं बात करता हूँ ऐसे। तो लोगों के एक लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है कि गे ऐसा होता है, लेस्बियन ऐसी होती है, लेस्बियन होगी तो छोटे छोटे बाल होंगे, लड़के ऐसे कपड़े पहनेंगी। मेरा नहीं, लड़कियां लेस्बियन दोनों तरह की होती है। तो जब तक हम सही जानकारी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक नहीं होगा। तो अवेयरनेस हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी आ रहा है। मैं देखता हूँ कि 94 में जब मम्मी को मैंने बताया था और आज की सिचुएशन में बहुत बहुत नागपुर में तो काफी फर्क है, बट
नहीं, अभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा काम कंप्लीट हो गया। 377 जाने के बाद तो मैं सोचता हूँ कि रियल जर्नी अब स्टार्ट हुई है, रियल फाइट, रियल स्ट्रगल अब स्टार्ट हुआ है। बट आई डिड हैव क्वेश्चन, मेरा एक सवाल था आप दोनों के लिए कि जरूर। सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं कि प्रॉब्ली पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? सबसे देखिए, पैसा, अगर देखो हमने जब 2006 में शुरू किया, 2 साल हम लोग ने अपनी जेब से पैसा लगा के काम किया। तब जो हम रीच आउट जितना करना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते थे। हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते थे, क्योंकि बड़े शहरों में क्या होता है कि आप की इनकम ज्यादा होती है, आप खर्चा ज्यादा कर पाते हो, तो यू पे फॉर 800 1000 रुपए पार्टी के लिए पे करना है, आप आराम से देते हो। छोटे शहरों में लोगों की इनकम उतनी नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट वाली पार्टी में शेयर करके आ सके। तो व्हेन यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ गेट टुगेदर, तो लोगों को कैटर मतलब बुलवाना, वहां पर बुला के आप क्या सिर्फ गेट टुगेदर तो नहीं कर सकते ना, आपको स्नैक्स या खाना या कुछ तो सर्व करना पड़ेगा, तो उसका खर्चा भी लगता है। तो वो अब नागपुर में अब धीरे धीरे शुरू है कि हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टी करना शुरू किया है, पहले नहीं था उतना। तो चैलेंजेस वो भी थे, अभी भी ये चैलेंज होता है। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग गे है, हाई फाई गे हैं, तो वहां हम आएंगे। अगर कोई हिलता डुलता है, कोई एफिमिनेट है, या उस पार्टी में ट्रांसजेंडर आ रहा है, तो हम वहां नहीं आएंगे। तो हम्म। आपस में ही एलजीबीटी कम्युनिटी में आपस में भी ये सारी चीजें हैं कि वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगा, वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगा। इवन इन अमंग्स द ट्रांसजेंडर देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। एक होता है डेरे वाले, एक होता है खैरगल्ले वाले या पन वाले। तो जो डेरे वाले आएंगे तो वो खैरगल्ले वाले नहीं आएंगे, खैरगल्ले वाले आएंगे तो पन वाले, डेरे वाले नहीं आएंगे। एज अ संस्था आपकी तो दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, आपको दोनों को कैटर करना है, आपको दोनों को सर्विस देनी है। लेकिन ये इनके आपस में, अ, इनके क्यों, हमारे आपस में ही इतने डिफरेंसेस हैं। मैं एक क्वालिफाइड गे हूँ, अच्छे से गाड़ी में घूमता हूँ, तो मेरा अलग एक क्लास होगा। मिडिल क्लास अलग होगा, लोअर मिडिल क्लास अलग होगा। जो एफिमेट होगा, मेकअप करता होगा, वो अलग है, उसका ग्रुप अलग होता है। तो जब हमको दुनिया से लड़ना है, समाज से लड़ना है, तो हम लोगों को आपस की दूरियां मिटानी पड़ेगी और एक आना पड़ेगा। ये चैलेंजेस भी छोटे शहरों में नहीं है, तो इन्हें बड़े शहरों में भी देखा है, काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। विशाल, यू वांट टू ऐड समथिंग? Yeah, I just realized that I did not speak about the challenges of activism in Kolhapur. या। The biggest challenge that we faced initially was कि कोई openly open spaces में जैसे restaurant cafe में आने के लिए मिलने के लिए डरते थे। हम लोग का पहला एक साल अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में ही हुआ, जैसे पॉटलक डिनर्स या कोल्हापुर के शहर के बाहर कोई पिकनिक स्पॉट जहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते नहीं होंगे, ऐसी जगहों पे हम लोग गेट टुगेदर करते थे। बट उसमें से अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्रोवाइडिंग स्पेस वेयर वी कुड गैदर एंड टॉक टू ईच अदर, हम लोग उसके अलावा और कुछ एक्टिविज्म प्रॉपरली जो सोसाइटी में चेंज लाना था, जो लोगों के माइंडसेट में चेंज लाना था, वो छुप के नहीं कर पाते थे। So it was a very tough call that I had to take, and my other friends who were with me, we had to take was, like being open, like, opening up a social media page or open mein aana. So that is where a lot of people left us because they were scared to come in the open. So they stopped associating with Abhimaan. That was the first thing. Like Anand said, there's a lot of transphobia. When we started involving trans people and started involve, I mean, we were always trans friendly and everything, but when actually we started gathering at public spaces and hijras used to come to our meeting, many more cisgender gay people left. So this was also a challenge, the internal biphobia, transphobia, or even the fear, like, okay, we'll be seen with gay men at a restaurant. Might be people might know they are gay, they are not, they don't know they are gay, but if they are seen hanging out with transgenders and hijras, they will be outed. So that was another challenge. Uh, so initially we faced a lot of these problems about whether we keep the meetings underground, we keep it in the open, we have social media platforms. Even now, if you see, apart from the allies that are associated with Abhimaan, there are only few cisgender homosexuals who are out in the open on the Abhimaan page, or they come out openly in front of media and everybody. We've got trans men who come out, we've got trans women, hijras who come out, but cisgender homosexual men are not out.
You might know others who work with me. I think Anand might have met somebody who represents Abhimaan on different occasions at Humsafar ka meetings. Even those who are coming for the Humsafar ka meet and all, they are themselves not out. And when it comes to a public face, it's just me. I'm the only cisgender homosexual there. Another problem that we face is classism, like Anand rightly pointed it out. Now there's a reverse classism also. I try to be we are accepting, we try to work in Marathi, we try to work with all class of people, but since the people involved with activism are English speaking, and they have their limitations in creating the messages or creating the posts in Marathi, and nobody Hmm. from the community who knows to speak Marathi and write Marathi comes forward for activism, then they say that you are being biased. You are only preferring the English speaking, and for that we had to work. We had to start learning Marathi, start typing in Marathi. I can speak in Marathi. I go to these organizations and speak in Marathi. Even our Abhimaan ka get together that happen, I speak in Marathi, but to write, to make posts on social media, that becomes a challenge for me. This is nothing to do with the challenges of activism in small town, but it is also because people who are involved in activism come from a particular class and others feel left out, although we don't intentionally do that. Yeah. Another problem is when there are problems. If somebody is being bullied, if somebody is being blackmailed, if somebody is being threatened, they come to us for help. And when we tell them, "Ki, let's go and report it to the authorities, to the police," they are like, "Hamara naam nahi aana chahiye." Now, how is this possible? Without I cannot go and tell that somebody so and so has been threatened and this guy is threatening him. Go and catch this guy. The police will also need proof. So they are not ready to take stand for themselves. And initially this happened that we stepped forward to help somebody, and then they withdrew. They said ki nahi, aisa kuch nahi hai karke, and then it was our neck which was caught in the whole situation. So Hmm. that's another challenge. Are you planning Speaking, to register Abhiman as well? I want to ask that. yes, You yes, register? I'm coming to that, that's another challenge because see, everybody comes for events, Yeah. everybody helps till the time there are smaller projects, but when it comes to something serious like registering or Hmm. all those things, nobody steps forward. Anand said that he had difficulty finding the second person registered. I have just me, nobody else who's coming forward to register. Okay. Nobody wants to go on the paper, and not just about registering, it's also about giving time. Like I told you, most of the people from Kolhapur move out to bigger cities in search of job, and whoever are here, they are so busy with their work that they don't have time to contribute for the initiative. Correct. Yeah, I agree. When we started Sarathi, people who were with us, they have moved out to Pune, Bombay, other places. I had to find a new people to work with me, and luckily now we have a project and we are able to pay the staff. I have a full time staff, 10 people who are full time working with me. So I like we work for HIV, but when I appoint the staff, I always made it clear that you will get the salary to work for HIV, but you will not get the salary for other work. Any Hmm. advocacy, media, police, anything, we will not able to pay for it. Now, even at Abhimaan, when we have people coming in, joining, working, they work for one particular event and everything, and 6 months down the line, they've moved out of the town. They've gone out for education. So you need people who are constantly there throughout the struggle, throughout the journey of an initiative. So that constant people, are not there. So every time I have to explain everything to them, what is to be done. Every time I have to teach them everything. True. I remember Humsafar Trust used to keep inviting us for various things to, build our capacities for advocacy. And then I used to feel that I should give opportunity to everybody else. And I used to send other people from the initiative, but they used to go, come, and after 6 months, they've shifted to a different job. So somebody who went at Humsafar Trust to learn how to register an initiative is no more associated with Abhimaan anymore. Somebody who Yeah. learned how to tackle the legal cases is no more here with Abhimaan anymore. Somebody who learned how to handle the social media is no more with Abhimaan. So Yeah. that becomes a challenge. There is no constant group of people who are always there with you in your journey.
And those who are here and who are committed, they want to help, but they are so busy, uh, you know uh, with their works and everything, that can nobody can give that kind of time that Hmm. we register our initiative. Okay. I also wanted to check what are you expecting from people or even brands like us? What do you think people in your cities or people in bigger cities can do for people in smaller cities? Or even a brand or even corporate, what can they do to help you all? Every corporates have their CSR budget, Yeah, right? So I have not. I've seen many few corporates use their budget of CSR budget for LGBT or human rights. So if they hmm, focus on creating some CSR budget for supporting LGBTQ community in smaller towns, that will be a big help. true. And even what I notice is a lot of people from small cities will always go to a pride parade or any big event happening in the bigger cities, but no one from big cities come to small city pride parades, which are more important, which are really like I really want that to change first. Nagpur is lucky in that case because we have always maintained the relationship with Laksha Trust and Humsafar Trust. The people from Laksha, like Prince Manvinder Singh Gohil, he himself comes for Nagpur Pride every year, and Humsafar team, and now the people from Mumbai, Calcutta, Bangalore, mm, Nashik, all people come to. Yeah, but the challenge is that local people from Nagpur is very few who come and participate. True, yeah. Everybody will go to Bombay Pride, Delhi Pride. But when it is in Nagpur, they will not. Yeah, I guess it's also because it's easier, it's a smaller city, people get recognized very easily. So I guess that is also an issue for people. Yes, Ashish, you know you are from Nagpur. So Nagpur, if you start from one point to reach another point of the city, it takes only 30 minutes. Yeah. It takes So 10 people, minutes in Kolhapur. yeah, but I tell you, this is a myth. This is a myth. When I came out in the media in 2008 or 9 something, my friends scared me. Anand, people will recognize you if you are standing on the red light at the signal. People say, "Hey, देखो गे जा रहा है, देखो गे जा रहा है." People scared me, but unfortunately, fortunately, ऐसा कुछ हुआ नहीं. मुझे कोई पहचानता नहीं ऐसे. इतना Anand, पेपर में that आने के बाद भी, happens मीडिया में आने के to बाद. me. That happens to me. I go sit in a restaurant. I'll at least notice two people on two different tables will point. You know what? Look at that guy. He's the openly gay guy in the Kolhapur city. Yeah, okay, they are Oh, pinpointing Matlab, what they're I'm coming to you, they are and harassing you. No, no. and even my friends, they keep telling me, you know what, these guys were talking about you, these guys were speaking about you. So I think it's more so in Kolhapur being even smaller than Nagpur, I No, guess. no. I take that. I take that positively. Oh, I'm celebrating. People know me. Now I take that possibly also, but it's not very good for the people who cannot handle it that way, like, or you true, get what I true. mean, Yeah, like. I had seen that many of my married friends initially, not now. When I used to go out with them, they used to get little hesitant. अरे आपके साथ जा रहे हैं तो लोग आपको पहचानेंगे तो लोग हमारे बारे में सोचेंगे कि हम भी ऐसे हैं. Hmm. अब नहीं, uh, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है ऐसा. अब तो आई एम मोर आउट विथ माई स्ट्रेट फ्रेंड्स. लाइक मैं जब भी आउटिंग जाता हूँ मेरे स्ट्रेट फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, एंड दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. दे आर प्राउड that Anand, you are out and proud gay, and we are proud of you. Ashish, Yeah. as regards to you were saying what corporates can do or what you can do from your end is like, whenever you have these capacity building programs, the Mm-hmm. people who are participating, I have seen like organizations do compensate them very well, Yeah. but still it's not enough, because Yeah. the only solution I see for small town people to be committed to activism is when they will be compensated enough as much as they would True. earn from a job. Uh, Mm-hmm. if you tell me, Ashish, that I'll give you 15,000 rupees per month, Vishal, you employ one person in Kolhapur for Abhimaan, I'm telling you that will make a huge difference. If I can employ, see, for money anybody will do it, because that is the reason why most Yeah. people are not giving their time. Yeah. Uh, That's Yeah. what I CSR budget is very important, and uh, corporate but that can that support with needs to be CSR. there for longer time.
Mm. and consistently, you're getting what I'm saying. Again, Yeah. otherwise, if it's there for 3 months for a project only, then that person goes away, gets another job, then I have to again train somebody else to take a project. I have my own business. Right now, you Yeah. can see I'm there at my bookstore managing and attending this meet right now. Yeah. My father was supposed to relieve me, and I was supposed to be doing this from my home, but for some reason he could not come. So Mm. there are these limitations, if I have to share something personally, how activism has affected my business, my father has shoved the figures in my face. These are the figures after you started Abhimaan, and this is before Abhimaan, and you can see the amount of difference in the money I made before Abhimaan. Because my commitment to the business has gone down, Yeah. and then that is not motivating. That's in fact demotivating. I'm like, what, मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये? If I cannot keep my parents or myself happy and satisfied. So Mm. one solution to that question that you asked, if there is one person in one organization in every small city, you can give them, like, what, this budget, this amount is for that one person who's going to be with you, who will be employed by you or by us, or whatever way we work it out. I think that would make a hell lot of a difference. That's a very valid point. देखते हैं मैं try तो करूँगा and we also currently have no at all वरना मैं तो खुद ही कर देता but Huh. could be And someday also, when what you can do from your BeUnic side is, like, another thing is, like, when in this age of social media, yeah when you are promoting LGBT, open LGBT from local towns, that also helps. You have these places where you have models and everything. Maybe you could have a trans man from Kolhapur, yeah uh, yeah model for one of your products that you sell on BeUnic. That's also a boost. They feel like, they were contributing, or they are something karke. That also gives an mm. emotional boost to them. That'll be really interesting. I should plan Yeah, something like that. also a corporate can help out by adopting some small CBO like Abhimaan, or start providing jobs to the LGBT community in the Hmm. company. Hmm. Interesting. I had one last question. Have you guys faced any hatred or open homophobia at probably events you were planning or on I social have media? I'll tell you this incidents where I was given death threat. I couldn't sleep for a month altogether. I had spoken about this to um, people from other organizations. One person from a particular community had approached me that, he started his coming out process, and his father is listening to him and would like to know more, and would like to meet another LGBT and parents of LGBT who are accepting. Yeah. I said, okay, I'll meet you on so and so day karke. I'll get my father along, and on that day he would not receive my call. Okay. And after a month, I kept on calling him on and off, and after a month, his boyfriend tells me that, by the way, I forgot to give you this message. His parents gave me that if you or anybody from Abhiman tries to get in touch with this person, they will Hmm. have you killed. Arre bap. So the person who was trying to come out, who asked us for help, Yeah. didn't even give us the message that his father has sent us a death threat. His boyfriend also didn't bother to inform us that guy has sent us a death threat. They both didn't, and for a month we kept on trying to call them, and probably their parents must be thinking that we are some fearless people here who do not fear death. Yeah. What they did later on, that this particular gentleman, this gay person's father, probably he thought that we are not scared of that, because we had no idea that there's a death threat, and we kept on trying to call this father son. He started meeting parents of my friends and started telling them that uh, stupid things about me, that Vishal is a gold digger, he makes friends with rich straight men, converts them into homosexual, and then extorts money. So Arre bap. when he thought that the death threats were not working, then there was character assassination. Thankfully, every Hmm. of the friends parent that this father went, they all told me कि this guy is doing like this, and they all told this father कि ऐसा नहीं है, we know Vishal and we trust him करके. And Yeah. mind you, these were the parents of my straight friends, not even my homosexual friends. Hmm.
So crazy stuff, and once we had somebody who was associated with Abhiman, and then we started having trans people over, and then we had some clashes. Then that guy started making life miserable for me because I took a stand. I said Yeah. we are working for everybody, or we are not working for anybody. We are not just going to work for cisgender homosexual people. Yeah. So that person again started, trying to spread rumors about me, and then when I tried to tell people that he's spreading rumors about me, he again sent me threat that I'll get you beaten up, I'll get you killed. So I don't know, like these are the two incidences where I faced hatred and violence and threats and everything. Hmm. Anandji, have you faced any like such? एक तो you're trying to do good work and ऊपर से when all of this happens और भी like Uh, demotivate uh, हो जाता है. it's a part of journey. There are Yeah. many incidents I faced it, and I know how to tackle it now. Initially, it was little I bit think Anand and I should difficult. have a separate session where he guides me on how to handle these situations. Because I get totally scared. I seriously get Yeah. scared. I keep working. I'm scared, but I still keep working. But I do get scared. I do get petrified. I lose my sleep over it, and I'm still yet to learn to handle these situations. Hmm. Same. Even there was this one uh, woman. uh, Yeah. Go ahead. Anandji, you were saying I have found out the solution. I found out the solution. it's a pressed card. Yes, and this helps me. Doesn't work with religious extremists. You pull out Yeah. press card. You pull out police cards with the religious extremists. It doesn't work. No, 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 no. If something happens like that, when you go approach the police by wearing this, that I have a threat from so and so person, police will immediately help you. Oh. Okay. 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 The Even thing on the is, road, if you're going the somewhere and people are following you to kill you or to beat you, stop at the traffic signal, show this to the traffic police, and tell him that somebody is trying to hit me or somebody is trying to give a problem to me. So that cop will definitely help you. Or if you go to anybody, said I'm a reporter and there's a life threat for me, please support me. Anybody will support you. Okay. uh, I'll open it uh, to others as well. Professor Nestor Ashish, and Arlind, if you have questions, please unmute yourself and feel free to ask any question you have. Ashish, I know we are Yeah, talking about challenges today, but I also want to talk about the positive things for small towns. yeah, tell me, of course, yeah. Help reaches very quickly. Like if somebody is in stress and they call me, I can reach them in 10 minutes. Unlike in Bombay or Pune, if you are in Magarpatta and somebody needs help in Pimpri, you're not going to be able to reach there immediately. So that's a positive in small town. And another good thing that has helped Abhiman is students who come from the outside to study here, who the allies who join us. Provide a lot of support, and that's what has been happening with Abhiman. Our social media is totally handled by two people who are from North India and do not know to speak a word of Hindi, but they've still been working very hard to help Abhiman. Oh, wow. Even one thing I would say of which is a positive about small cities is me being from Nagpur also. I feel the community in Nagpur was like a family. It was also very small and very close. But as if in Bombay and Delhi and Bangalore, I just don't get that. You do make friends there, but they're not as close. And I don't know, it just feels very different in bigger cities. Yeah, that's there in Kolhapur also. Yeah. Chalo, I think this was a Ze- very insightful discussion. We will try our best to do whatever we can. I've noted down all the points. And Oh, Anis was a part of this webinar. I was not aware. sorry, Zainab Patel. Zainab was a part of this webinar. She was there. Zainab, She just left. e- I've invited Zainab for the next event as well. We are planning one on what can organizations do Oh, online, how to take inclusion and diversity online in these times when all of this is happening. and Zainab is a very old friend. In fact, she is the one who had written the first proposal for Sarathi. Oh, wow. Okay. That time he was Ernest Narona. He used to be a part of Humsafar Trust, and he wrote this proposal. He was totally unwell, 103 temperature,
but still Okay. he worked on it and drafted a proposal for us. So I always have a respect for her from my heart. Nice. Very nice. Chalo, so through these events is what we are trying to at least spread out the word that this is happening and there are people in small cities. कुछ करो उनके लिए भी and hopefully Yeah, we'll try and do like a fundraiser if possible. Let me plan something like that as well, and I will let you know. we also do crowdfunding for Pride March and other requirements. Right for COVID, we are doing it, but Hmm. people are not that generous to provide support to LGBT issues. नहीं, but next time if it happens, I will definitely भेज देना. मैं तो हमारे brand से we will definitely try and do at least minimum what we can. Thank you, हमारे से तो support thank you मिलेगा so अभी. much. That I can guarantee for बिल्कुल, sure. thank you, thank you. No problem at all. आप लोग अच्छा काम कर रहे हो. कोशिश करते हैं और इट्स नाउ इट्स अ पैशन लाइक वो अंदर से विशाल भी अब तक टिका हुआ है तो उसके अंदर वो पैशन है मैं इसलिए वो आज आनंद विश्वास नहीं करोगे कितनी बार ऐसे सोचता हूँ कि बस अभी मैं नहीं करूंगा बस मैं अभी नहीं करूंगा दैट इज हैपनिंग फ्रॉम आई स्टार्टेड इट Yeah. but no matter how I much understand. I loss totally understand I it. suffer, no matter how many threats comes, when a problem comes or when there's an issue, I just rush to it. I can't help myself, and Yeah. I don't know. I think all of us here understand that that we just do it because we feel it's the right thing to do, and we can't help ourselves from not doing it. Exactly. Even the last event we had with Sonal and Harish Iyer, that's what one of the audience members asked कि activism का पैसा तो मिलता है नहीं, so why are you guys doing it? And they were like, because you just feel like doing it. इसका you don't need money for it. पैसा तो मिलता है नहीं, उल्टा पैसा जो आता है वो भी आना बंद हो जाता है. हाँ जेब से जाता जाता है है, बल्कि. जेब से चला मैं जाता है, जेब से पैसा जाता it's not है. even about cash that we spent on the initiative. It's about the time that you give to the initiative takes away your time from the businesses and everything, and that's where you suffer the losses. True, true. अभी अभी रिसेंटली जो हमने कलेक्टर साहब के हाथ में मीटिंग किया है 3 दिन पहले, इतना अच्छा मीटिंग हुआ, इतने अच्छे अश्योरेंस सर की तरफ से आए और नेक्स्ट डे बिकॉज दिस मीटिंग वाज अबाउट द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल. ओके, सो Mhm. जैसे मैंने बताया दो अलग ग्रुप है तो एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मीटिंग में था, दूसरे वाले ग्रुप को बुलाया था वो नहीं आ पाया किसी वजह से. नेक्स्ट डे वो अपने ग्रुप को लेके कलेक्टर ऑफिस में जाके पूरी हमारी जो मीटिंग की थी ना पूरा पानी फेर दिया उसके ऊपर. हम क्यों गए थे, मैं क्या किन्नर हूँ, मैं क्या हर जेंडर हूँ, नहीं, मैं आपके लिए गया था और आप ही हाँ. ऐसा सीन क्रिएट करोगे तो कलेक्टर पर क्या इंप्रेशन जाएगा. I have been sent uh, uh, these some transgender people have sent me threats. They've spoken like why are you doing this? What are you doing this? Don't do this. Don't do that. So the internal egos, the clashes, been victim to that also, but I don't talk about it. Like okay, Mhm. so, like since this is a safe space and this is only community, I can talk about it. But outside community, I don't share that these problems keep happening because if the outside world sees that you are yourself not united, you are yourself fighting Yeah, amongst yourselves, then yeah. I don't know. Nobody would be willing to help that cause. I wouldn't be willing to help in a cause if people are fighting among themselves. We are working on it. We try to make peace. We try to make everybody understand that we are all here for each other. Sometimes it works, sometimes it doesn't, and at those times I just take a step back and I let things take over. Like, okay, you guys do whatever you want to. I'll not do anything. Hmm. I don't know if other cities may you are facing this problem where some particular group or people they don't want you to work. They don't want you to. They don't अरे want you Normal. to have any advocacy or any Yes, activism. yes, 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 yes. They just Totally, don't. totally I agree. don't know what are they scared about. Like yeah. I don't know what are they getting some benefits by their work personal which is getting affected by us coming there. I've still not been able to figure out, but then sometimes I just take a step back just so that what, okay, all right, you guys do whatever you want to do. I'm not here for that, and True, I'm true. अभी here just अभी to मैं make a बता रहा हूँ ना difference and जो I जो find ways to इंसिडेंट do हुआ, it. अभी जो इंसिडेंट हुआ हम लोग ने कमिश्नर कलेक्टर साहब से मीटिंग किया, नेक्स्ट डे लोग ने जाके वहां पर हंगामा किया. उसमें से एक ने एक पर्सनल वीडियो बना के कलेक्टर साहब के लिए बहुत गंदा गंदा बोला और वो वीडियो वायरल हुआ और हमारे एक सो कॉल्ड नेशनल एक्टिविस्ट, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट
बॉम्बे से, उसने उसको इन्फोसिम ग्रुप में, जो इन्फोसिम पूरे ऑल इंडिया का नेटवर्क है जहाँ सारी संस्थाएं जुड़ी हुई है, अच्छा Hmm. वाला, हमने जो एडवोकेसी किया वो नहीं डाला, जो वो अपोज में वीडियो था वो उसने ग्रुप में पोस्ट किया। Oh God. Yeah. एग्जैक्टली जब मैंने वो न्यूज कटिंग शेयर किया कि हमने इतना अच्छा एडवोकेसी किया है, उसके बाद Hmm. नेक्स्ट मैसेज वो हमारे सो कॉल्ड नेशनल लेवल एक्टिविस्ट, उन्होंने वो जो गंदा वीडियो था वो वहां डाला ग्रुप में। Yeah. And similar thing, somebody had a voice note, a personal conversation with some other person who was going on speaking bad things about me, and that voice note, this person spread CC people speak like this about Vishal Karke. And everybody thought ki Vishal is going to stop working, Vishal is not going to hold any more events, but that didn't happen. Hmm. Yeah. Then people were like, Vishal, like now we are really proud of you. If you can go through this shit, people giving you bad words, like you know how That's some people massive. use really shitty words, Yeah. and then they say such things about you, but still you turn up and you come and you do the same thing every day. So I don't know. It is surprising even for us. It's people from the community. Two, three people from the community did try to pull me down and stop all my work. But then I had 100 others who wanted me to continue and go on. So I was like, यार, अभी दो तीन लोगों के लिए मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं, मैं तो करूँगा. So hats off to उल्टा you both as well. You both are doing great work. And उल्टा ये इल्जाम लगता है कि आपकी संस्था तो लोगों को ट्रांसजेंडर बनाती है। आपके पास वो आया था तो वो पैंट शर्ट में था, और 2 साल बाद 3 साल बाद में वो तो क्रॉस ड्रेस करता है, या वो हिडलो में चले गया, या वो ट्रांसजेंडर हो गया। अरे भैया, उसके अंदर वो था दबा हुआ, hmm. हमने नहीं बनाया उसको हिजड़ा। उसकी कोती, उसके अंदर की जो क्वीन थी वो बाहर आ गई, उसके अंदर की औरत बाहर आ गई, और उसने फिर चूज किया वो उस लाइफ में जाना। ये नहीं चलो, I देखेंगे think कि कितनी coming शादियां from हमने रुकवा दी, time. जो जबरदस्ती शादी हो रही थी, जबरदस्ती की शादियां हमने रुकवा दी, वो नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, किसी ने अपना सेक्स चेंज किया तो बोलते आपने बना दिया इसको। I think Ashish, the stories remain same, just the name of the cities keep changing. Yeah. And यस। name of the activists keep changing. Whether it's Vishal in Kolhapur or Anand in Nagpur, the stories are same. And it's good that we have such platforms so that Vishal and Anand can learn from each other's experiences and things become easier for both of us. Exactly. Exactly. Thank you so much, Ashish. No problem. Thank No you so थैंक problem यू at much. all. आशीष, थैंक यू आशीष एंड टीम बी यूनिक टू गिव अस द प्लेटफॉर्म कि यहाँ If हम Yes. अपनी yeah, सोचे I, शहरियों I की बात बता wanted पाए। one more thing. If you guys know LGBT entrepreneurs in your cities who would like to sell their stuff on our website, please feel free. I would be more than happy to have them on our website and help them reach a wider audience. If you can make a श्योर। message about this in Marathi and send me, I'll broadcast it ठीक है, I will do that today. in Marathi. Done, done. I have friends. माझी मराठी खूप चांगली नाही आहे, पण नाही माझी मराठी खूप चांगली आहे मला टाईप करता येत नाही सो दॅट बिकम्स अ same. लिमिटेशन अँड Same. I have volunteers. I ask them and they don't give it on time, and that is disheartening. My heart breaks when people who Exactly. commit to the cause and don't do things on time and take it for granted. Then I don't feel like asking them. So that's another issue I face. There are volunteers, there are people from the community who say we'll do this for you. We are there for you. Who are the ones who create an issue that why there are no Marathi messages coming, why there are no posts coming in Marathi. When I tell them that will you do it, they say yes, and when I give them to do it, they don't give me the translations for 2 to 3 days, and then Gone. Yeah. yeah. Wait, in fact, if it would have been paid and उसको पैसा मिल रहा होता, I think that would have helped. That would have encouraged. But That way, then I don't have to ask anyone from the community. Also, I can give. But money should be there, and for yeah, these, if you cannot do that much for your own community, then it's disheartening. Then it's demotivating to the people who are actually doing work for the community. true. Chalo, I think we should wrap up. Thanks a lot Yeah. for your time, Thank you Vishal so and much. Anandji. It was really interesting. It was very insightful. We'll try our best to do whatever we can from our side. And we wish you all good luck and continue doing the great work that you're doing. Thank you. Bye, everybody. थैंक यू Lots of आशीष एंड hugs. टीम, थैंक यू, बाय बाय। Thank you. No problem at all. Bye bye.